So in this video we are going to study the next chemical property of alkenes, and that is hydrohalogenation of alkenes. Okay, so write down addition of hydrogen halides. It is also called addition of hydrogen halides. Addition of hydrogen halides to alkenes. Okay, and it is also called hydrohalogenation. Hydrohalogenation. Now this name itself indicates that there is an addition of hydrogen and halogen across carbon-carbon double bond. Okay. Now suppose I am writing here the general reaction. This is alkene, you know, because it contains carbon-carbon double bond. Okay. If HX is added to it, that is a hydrogen halide, then hydrogen goes to one carbon, X goes to another carbon, and there is a formation of, you can say, alkyl halide. Okay, so it is called alkyl halide. We have seen the different groups, right? So this is alkene, it is hydrogen halide, and it is alkyl halide. So whenever HX is added to alkene, that is hydrogen halide, when it is added to alkene, we get alkyl halide. What is X here? You know what is X here? X is equal to Cl, Br, I, etc. Okay. So write down the general reaction first, and then we will see the order of reactivity of hydrogen halides. What is the order of reactivity? Please note that also. Order of reactivity of hydrogen halides is Hi greater than Hbr greater than HCl. रिमेंबर, तो सबसे पहले कौन रिएक्टिव है? अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स में देखा हमने हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड, देन Hbr, देन HCl. Okay, so this is what the order of reactivity of hydrogen halides towards alkene. Okay, so this is a general reaction. Now we'll see the specific examples of it. Okay, note down this first. Now see here, we will take the examples now. Okay, how this addition takes place? We'll see addition of Hbr. Now in this case you have the two cases. First symmetrical alkene and unsymmetrical alkene. Okay, तो पहले हम देखेंगे एडिशन टू सिमेट्रिकल अल्कीन. सिमेट्रिकल अल्कीन. अब जब सिमेट्रिकल अल्कीन में हम HX ऐड कर देते, फॉर एग्जांपल मैं आप ऐड करता हूं, देखो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक अल्कीन. दिस इज सिमेट्रिक अल्कीन. यू नो द नेम ऑफ दिस अल्कीन, that is ethene. Why it is symmetrical? Because if you see, if you draw the plane, vertical plane, you'll get the same sides. On both the sides you'll get the same groups. If you draw the plane over it, or vertical or horizontal plane, you see the same parts, right? अगर आपने vertical plane draw किया या horizontal plane, आपको same parts मिलेंगे. उस अल्कीन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन. अगर सिमेट्रिकल अल्कीन में मैं अगर Hbr ऐड करता हूं दोस्तों, Hbr में ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है Br. ठीक है, आपको पता है हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, राइट? हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर मैं ऐड करता हूं अल्कीन में, होता क्या है देखो, हाइड्रोजन एक कार्बन पे जाता है, Br दूसरे कार्बन पे जाता है. अब देखो हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाए तो वो CH3 हो जाएगा. ठीक है, हो जाएगा CH3, फिर डैश CH2Br, क्योंकि Br इस कार्बन को अटैच होगा. ठीक है, देखो मैं लिखता हूं HCHHCHHBr. We can write CH2Br, that is called ethyl bromide. Very simple.
अब देखो मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलता है। अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स, उसमें आपने एग्जांपल लिया है हमने HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर सिमेट्रिकल अल्कीन में हम ऐड करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट मिलता है इथाइल ब्रोमाइड। देखो Br अगर इस कार्बन पे गया तो भी ये प्रोडक्ट मिलेगा, Br अगर इस कार्बन पे जाए तो भी CH3 CH2Br, one and the same. So only one product is obtained in the case of symmetrical alkene. So note down that point. Only one product is obtained in symmetrical alkene. Symmetrical alkene में एक ही प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। So note down this example. Okay, so in this way you can easily sort out the product obtained when hydrogen halides are added to symmetrical alkene. Okay, you can take different examples for the symmetrical alkene, ठीक है। HBr ऐड कर सकते हो। अब समझो मेरे पास है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। आई एम टेकिंग नाउ डिफरेंट एग्जांपल फ्रेंड्स। यहां पे अगर मेरे पास है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देखो मैं लेता हूं सेकंड, एडिशन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, एडिशन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर ऐड हो गया हाइड्रोजन हैलाइड्स, देखो मैं लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, that is propene, right? You know the name. So here two products are obtained. Now see here, देखो अब HBr अगर मैंने ऐड कर दिया इसमें तो मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कैसे मिलते हैं देखो, समझो मेरे पास है HBr, H प्लस एक हाइड्रोजन जा रहा है समझो इस कार्बन पे और Br जा रहा है इस कार्बन पे, तो मुझे प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? CH3 CH2 डैश CH2Br, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, ठीक है। इन अदर वे इफ ब्रोमीन गोज टू दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन, I will get the different product CH3 CHBr CH3. Okay, so I am writing the two products that I obtained. First product I am writing CH3 CH2 CH2Br plus there may be possibility of forming this type of product CH3 CHBr CH. Now see, Br if it goes to this carbon, then this is the product. Okay, it is called N-propyl bromide or 1-bromopropane, 1-bromopropane or N-propyl bromide. It is the IUPAC name 1-bromopropane. And what is the IUPAC name of this? 1 2 3 2-bromopropane. Okay, 2-bromopropane. Now in this case, this is the major product and this is the minor product. According to which rule? That we will see. That is according to Markovnikov's rule. Markovnikov's का rule आपको बताता है, Markovnikov's rule states that negative part of reagent, this is the reagent, okay, this reagent, in this reagent negative part goes to that carbon which contains less number of hydrogen atom. अब देखो ये दो कार्बन आपको कंसीडर करने, क्योंकि ये कार्बन तो इसकी तो वैलेंस सेटिस्फाई है और सिंगली बॉन्डेड, it is singly bonded or all bonds surrounding this carbon are single. Okay, so you have to consider these two carbons which are doubly bonded, right? Now this negatively charged part of the reagent goes to that carbon out of these two which contains less number of hydrogen atom. अब इसमें देखो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, so Br goes to that carbon which contains less number of hydrogen, means middle carbon, that will be the major product. Okay, this is according to Markovnikov's rule. Okay, so you must remember the major and minor product when this reagent hydrogen halide is added to unsymmetrical alkene. Now this alkene is called unsymmetrical alkene because if you draw the plane across this carbon carbon double bond, you will get two different parts. On right side you will get CH2, on the left side you will get CH3CH. So this is unsymmetrical alkene.
Okay, so when these hydrogen halides they are added to unsymmetrical alkene, we get two products. Out of that, major product is that one in which negative part goes to that carbon which contains less number of hydrogen atom. That is Markovnikov's rule. Okay, so wrote down these two products obtained with the chemical reaction. Okay, so this is what the addition of hydrogen halides to symmetrical alkene and unsymmetrical alkene.